हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 12 के इंग्लिश बुक का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं और इसलिए उनके आगे भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? यानी कि जो राइटर है चैप्टर की, वो बच्चों के जूते न पहनने पर क्या बोलती है, क्या एक्सप्लेनेशन देती है। तो वो बोलती हैं, द लैक ऑफ मनी इज़ वैलिड एक्सप्लेनेशन। चिल्ड्रेन लाइक साहिब कांट अफोर्ड शूज़। When Sahib gets a pair of shoes, he wears. One explanation is that it has become a tradition for them to stay barefoot. But the writer doubts it. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what makes the city of फिरोज़ाबाद फेमस? तो फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. Every other family here is engaged in making bangles. It is famous for its bangles. नेक्स्ट क्वेश्चन है, mention the hazards of working in the glass बैंगल्स इंडस्ट्री. यानी कि जो चूड़ी का इंडस्ट्री है, जो चूड़ी के उद्योग में काम करने से क्या क्या खतरे हो सकते हैं. ठीक है, अब इसे घुमा फिरा के भी अगले तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा. चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं. देखिए, वर्कर्स वर्क इन डिंगिंग सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. दे लॉस their brightness of their eyes. The powder from the polishing of bangles also blinds them. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did साहिब ज्वाइन द जॉब फॉर द मिल्क बूथ? देखिए, जो साहिब था उसने मिल्क बूथ पे नौकरी क्यों ज्वाइन की थी? तो साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही गॉट देयर मनी एंड ऑल हिज मील्स. ही वॉज पेड 80 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस. 800 रुपीज़, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश कौन था और उसकी क्या मतलब कि एम्बिशंस थी, उसकी क्या महत्वाकांक्षाएँ थी. हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन? देखिए, इसके आंसर होगा, मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद वेयर ईच फैमिली इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग. दे लिव इन हाफ बिल्ट हट्स एंड स्टिकी lens. On asking, Mukesh says, I will be a motor mechanic. I will learn to drive a car. Thus he want to be his own master. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन इन सीमापुरी? जो सीमापुरी के बच्चे हैं उनके लिए गार्बेज यानी कचरे का क्या महत्व है? तो देखिए, सीमापुरी इज़ अ स्लम इन दिल्ली. चिल्ड्रेन ऑफ सीमापुरी एंड देयर पेरेंट्स आर रैग पिकर्स. For adults, rag picking was only a means of survival, but for children, a lot of excitement was associated with the same of they often found. आगे चलते हैं. Unexpected things are a 10 rupees as a 10 rupees note in the same. There was always a hope of coming across an unexpected surprise, and so garbage was wrapped in a wonder for them. नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड? यानी सीमापुरी कहाँ पर है? तो सीमापुरी इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ न्यू दिल्ली. इट इज़ एन ओल्ड नेबरहुड inhabited by mostly immigrants from across border in Bangladesh. This place is home to several rag pickers. They earn their daily bread for rag picking. The 50 branches have remained unattended for long. Poverty is widely prevalent in this area. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. What was the meaning of garbage for children? What did they find in it? मतलब कि जो बच्चों के लिए कूड़े यानी कचरे का क्या महत्व था और उन्हें उसमें क्या मिलता था. तो small children look for something valuable in heaps of garbage. They accept to get some coin, note or a valuable thing in it. Sometimes they find just 1 rupee or at times even a 10 rupees note. This gives them a hope to find more. Thus, for children, garbage is a source of wonder. चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं. देखिए,
What do the inhabitants of Simapuri do for their survival? तो Simapuri is a slum area located in the East Delhi district of Delhi, India. It is home to thousands of people who live in extreme poverty. The majority of the residents of Simapuri are rag pickers who earn their livelihood by collecting the selling recycled waste. It is a challenging and hazardous occupation and provides steady source of income for the residents of Simapuri. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी. मतलब कि सीमापुरी के रैग पिकर्स का जो जीवन था, जो लाइफ था, उसके बारे में बताइए. तो देखिए, Simapuri is a settlement of more than 10,000 rag pickers. It is a place on the periphery of Delhi. Those who live here are squatters who come from Bangladesh in 1971. Rag pickers live in structures of mud. They have roofs of tin and tarpaulin. There is no sewage, drains or running water. देखिए, they live here without an identity and without permits. Food is more important for them than their identity. Children grow up, become partners in survival. An army of barefoot children appear in the morning with their plastic bags on their shoulders. Garbage has a different meaning for children. For them, it is wrapped in wonder. They may find a rupee, even a 10 rupee note or a silver coin. There is always hope for finding more. Next question देख लेते हैं. What forces conspire to keep the workers in the bangles industry for फिरोज़ाबाद in poverty? यानी कि जो फिरोज़ाबाद है, जो चूड़ी का जो इंडस्ट्री है, उसे मजदूर, जो गरीब मजदूर है, मजदूरों को गरीब ही रखने के लिए कौन सी शक्तियाँ जो है षड्यंत्र रचती थी. देखिए, इसका आंसर देखिए, देयर आर सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्टेड एंड फोर्सेस दैट conspire to keep the workers in the bangle industry of Firozabad in poverty. Anis Jung rightly analyzes that there are two distinct worlds operating in Firozabad. The first world consists of families engaged in the business of making bangle. They are exploited and they are caught in a web poverty. The other world consists of sahukars or policemen. Together under their eyes 20,000 children work illegally in glass furnaces with high temperature. Even the young fall into the vicious circle of middlemen. These against web trapped their fathers and forefathers as well. If the young get themselves organized, they are hauled up by the police. Years of mind-numbing toil has killed all initiative in them. They can't think of organizing themselves into a cooperative. Powerful people keep the workers in bangle industry helpless and poor. देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मेंशन द hazards of working in the glass bangle industry. यानी कि जो चूड़ी का इंडस्ट्री है उसमें काम करने में के जो खतरे हैं उनका उल्लेख करना है आपको यहाँ. चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. देखिए, the glass bangles industry has many health hazards. It usually employs small children. It is illegal to employ very young children in hazardous industries, but certain forces like middlemen, moneylenders, police and the politicians combine to entrap the poor workers. Let us consider the places where bangle makers work. It is a cottage industry. They work in the glass furnaces with high temperature. The technicians are without air and light. Boys and girls work hard during the next two lines of flames of flickering oil lamps. आगे है,
They weld pieces of colored glass into circle of bangle. Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside. It is why they often end up losing their eyesight before they become adults. Glass blowing, welding, and soldering pieces of glass are the all health hazards. Even the dust from polishing the glass of bangles adversely affects the eyes, and even adults so blind. Thus, the surroundings, prevailing conditions, and the type of job involved all prove risky to the health of the workers. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ योर ओपिनियन, मतलब कि हाउ इज़ योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। देखिए मुकेश को अपनी ड्रीम मतलब कि कैसे साकार कर सकता है वो देखिए। Mukesh is the son of a poor bangle maker of Firozabad. Most of the young men of Firozabad have no initiative or ability to dream, but Mukesh is an expectation. He has the capability to take courage and break from the traditional family occupation. He has strong willpower also. He does not want to be a pawn in the hands in the middlemen or money lenders. He instead on being his own master by becoming a motor mechanic. He realized his dream by joining a garage and learned the job of repairing cars and driving them. He will have to overcome many hurdles before he succeed. Then comes transport problem. The money is the first one. He will have to earn some money himself. The garbage is a long way from his home. He will have to cover it with everybody anyhow by walking on foot. Patience, hard work, will the determination to learn will help him realize dream. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिसप्रोबेबल प्लाइट ऑफ बैंगल मेकर्स। तो देखिए इसका आंसर होगा, Firozabad is the hub of India's glass blowing industry, where families have spent generations making bangles to adorn married women. The stark reality of these families is that, in spite of the back-breaking hard work that they put in, they cannot have 2 square meals a day. They work in the deplorable condition, and many lose their eyesight early. To top it all, they live in unhygienic conditions where there is a lack of basic maintenance too. The sad reality is that the workers cannot organize themselves into a cooperative. They are developed to all. आगे देखते हैं, they are developed to all enthusiasm and do not to dare to dream to anything better. The fear of the police and the lack of leadership among themselves have confined them to a vicious circle of poverty, independence, and greed. Thus, while they bring happiness to everyone's life, their own life is steeped in poverty and squalor. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्लास खत्म होता है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। ये देखिए, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे सेकंड चैप्टर से रिलेटेड, लॉस्ट स्प्रिंग से रिलेटेड। तो आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।